Hello everyone, welcome to second session on vocabulary through roots. Guys, I hope जो last class में हमने concept discuss किया था, it proved beneficial for you. So using the same concept, I'm going to discuss some more words. So let's begin with the words for the day. The root is senex. अब यहाँ से हमारे पास कौन कौन से words आते हैं एंड कौन कौन से रूट से हम लोग ये वर्ड्स फॉर्म करने वाले हैं. ये रहे कुछ रूट्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस स्लाइड पे एंड दीज आर द सेट ऑफ वर्ड्स दैट वी विल डिस्कस. सो लेट्स बिगिन विथ सेनेक्स फर्स्ट. अगर आप देखें तो यहां से मेरे पास जो पहला वर्ड आता है वो है सेनेटर. नाउ सेनेटर इज a person who is old and experienced enough to discuss important issues of society. अगर आप देखें तो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेनेटर का मतलब दे रखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट देन एटिमोलॉजिकल मीनिंग इज अ पर्सन हु इज ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड हु इज रेडी टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ सोसाइटी एंड द प्लेस वेयर दिस पर्सन सिट्स एंड डिस्कसेस दीज इश्यूज इज कॉल्ड सेनेट. आपने ये दोनों टर्म्स जो है काफी बार हॉलीवुड मूवीज में भी सुने होंगे. नेक्स्ट अगर आप देखें if you look at this root sent, this means to move. इससे कौन कौन से words हम लोग generally use करते हुए आए हैं? Ascend is one, descend is one. So ये कुछ words हैं जो हम लोग अभी तक use करते हुए आए हैं. Ascending, descending, आगे बढ़ना, पीछे जाना. So if I add sent to senex, the one word that I get is senescent. Now using the meaning of these two roots, you can identify the meaning of this word as well. Senescent is a person who is growing towards old age or who's going towards old age. Next, जो senex से ही आया है, the word is senile. Senile is an adjective which means a person who is physically and mentally deteriorating. क्योंकि हम लोग ये अक्सर हमने देखा भी है कि जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं वो फिजिकली भी डिटेरियोरेट होते हैं, साथ में मेंटली भी डिटेरियोरेट होते हैं. दे यू नो ऐसा होता है कि वो एडमेंट होते जाते हैं एंड ढंग से सोच नहीं पाते. व्हाई? बिकॉज ऑफ मेंटल डिटेरियोरेशन. अगर मैं सेंट से और वर्ड्स देखूं, so the first word that I get from sent is evanescent. अब evanescent comes from vanesco. Vanesco is a root which means vanish. Vanesco is a root which means to vanish. So vanesco की अगर मैं बात करूं which means to vanish, evanescent का मतलब क्या हुआ? Something that vanishes quickly or something that is here to stay for a short term. इसका एक जो synonym हो सकता है, close synonym, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है ephemeral. Ephemeral can be a close synonym for evanescent. Next word from the root sent is putrescent. Now putrescent actually comes from putrid, which means putrid is rotting or something that is going bad. Putrid is rotting. So if I talk about putrescent, putrescent is something that is rotting or something that is decaying. Next is convalescent. Now convalescent का मतलब होता है recovery from illness. So a person who is recovering from illness can be called convalescent, who is moving towards good health. इसी का ही अगर हम लोग noun form देखें तो वो होगा convalescence. Convalescence will be that word. Convalescence का मतलब क्या होता है? Rehabilitation or the time that you spend time that you spend for recovery. So that's convalescent for you. इसके बाद अगर आप next यहाँ पे root देखें तो root है geron. Now geron की अगर बात करें, geron is old age. See, there's a profession which not many people might know about. The profession is called gerontology. A person is a gerontologist means a person takes care of the needs of the elderly. वहाँ पे as you know as and when a person grows old, he tends to lose interest in life and उस interest को बनाए रखने में gerontologist का एक बहुत बड़ा रोल होता है. He looks after physical needs, emotional needs, mental needs of the elderly. इंडिया में शायद ये प्रोफेशन अभी तक इतना पॉपुलर नहीं है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक ये प्रोफेशन भी पॉपुलर होने वाला है.
नेक्स्ट आप नेक्स्ट वर्ड जो देखें वो है जेरिएट्रिशन. ना जेरिएट्रिशन कम्स फ्रॉम जेरास. जेरास का मतलब होता है ओल्ड एज. सो यहां पे मैं आपके साथ एक बार इसके रूट्स डिस्कस करता हूं. द फर्स्ट रूट इज जेरास जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है. नेक्स्ट रूट इज इएट्रिया. इएट्रिया इज मेडिकल हीलिंग. इएट्रिया इज मेडिकल हीलिंग. नाउ शियंस जो होते हैं वो होते हैं एक्सपर्ट्स. यू फाइंड शियंस एट द एंड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्ड्स, जैसे म्यूजिशियन हो गया, डाइटिशियन हो गया, फिजिशियन हो गया. सो शियन इज एन एक्सपर्ट. नाउ आपने देखा यहाँ पे इएट्रिया भी है, जेरास भी है. सो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अ डॉक्टर. ही टेक्स केयर ऑफ द मेडिकल नीड्स ऑफ the elderly. In fact, there is a ward in hospital called geriatric ward, just as there is a ward in hospital called pediatric ward, जहाँ पे बच्चों को admit करते हैं, वैसे ही there can be a ward in the hospital called geriatric ward. So geriatrician is doctor for old people. I hope आपको ये सारे रूट्स समझ में आए and इनसे जो हमने यहाँ पे वर्ड्स डिस्कस किए वो भी समझ में आए. Let's move to next slide and let's see the next set of words. The next set of words that we have is in front of you. ये जो सारे words हैं, ये words कौन से root से आए हैं? अगर हम लोग roots देखें, so ये roots आपके सामने हैं. इन roots से ये सारे words बने हैं. So let's begin with congenital first. Now congenital, if I talk about congenital जो word है, वो कौन से root से आया है? Con. Now meaning of con in English might be different, but यहाँ पे जो con है, con is a root. So con का मतलब क्या होता है? Together. Genital comes from Genesis, which is birth. So something that comes with birth. Usually हम लोग इस particular adjective को medical conditions के लिए use करते हैं that he's suffering or she's suffering from some congenital disease. So congenital is something that comes by birth while he or she was still in his or her mother's womb. So that's congenital for you. अगर मैं next बात करूं, word is generic. If I talk about generic is something that has no name. Usually हम लोग generic को medicines के लिए use करते हैं. काफ़ी बार आपने सुना भी होगा generic medicines. जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो medicines बनाती है वो उनको name देती है. But then generic medicines have no name. They simply have common composition. And ये जो medicines हैं ये थोड़ी सी सस्ती भी होती है. So generic is something that has no name. If I talk about genetics, that's science of genes. What are genes? Genes are smallest particles that are transmitted to offsprings from their parents, right? So in genes में जो है वो hereditary characteristics present होती हैं and they are transferred to offsprings from parents. And science of genes is called genetics. Genealogy की अगर मैं बात करूं, genealogy is search of descent, line of descent और ancestry कि एक particular tree है या फिर plant है वो कौन सी मतलब उसका line of descent क्या है या फिर वो कहाँ से आया है. So studying line of descent is called genealogy. This can be applied to animals, plants. Humans पे ये अप्लाई नहीं होता. So genealogy is a branch of science that deals with line of descent. Next is geneticist. Geneticist is a person who practices genetics. Psychogenic. Now psychogenic, it comes from a root called psych. Psych का मतलब क्या होता है? Psych is mind or soul. Psych is mind or soul. So if I talk about psychogenic, आप देख रहे हैं ये genesis and psych दोनों से मिलके बना है. So something that has mental orientation or something that is not that has not taken birth in physical world, something that has taken birth in mind. So something that has mental orientation is called psychogenic. It can be used for some conditions as well. For example, he's suffering from some psychogenic disease. So it is not समथिंग जो बाहर से आया है, आपके माइंड में कुछ आया एंड वो आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो दैट्स साइकोजेनिक फॉर यू. आगे अगर देखें, वी हैव सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द सेम रूट, जीन और जेनेसिस. सो फर्स्ट इज जॉनर. We use this for a particular kind of music, literature or art. Next is general.
that's concerning all kinds. Generation belonging to same kind of age. So आप देखें यहाँ पे birth, kind, race, genesis में यही चल रहा है. Genus is a principal taxonomic category. Now what is taxonomy? नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ एक रूट डिस्कस करूंगा नोमोस. वहां पे मैं आपको टैक्सोनॉमी ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको टैक्सोनॉमी एक्सप्लेन कर देता हूं. टैक्सोनॉमी इज साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पे हम लोग डिफरेंसेस के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट homogeneous is belonging to same kind. Heterogeneous is diverse in character or content. Progeny comes from pro, which is forward, and geny comes from genesis or birth. So progeny is basically an offspring of a person or an animal or a plant. So these were some words that I wanted to discuss with you, and they were derived from the root जीन और जेनेसिस. सो गाइस, देखा आपने किस तरीके से हमने आज कुछ रूट्स डिस्कस किए, वनेस्को, जेरॉन, जेरास, जेनेसिस, जीन, एंड इनसे हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पे डिस्कस किए. I'll bring some more interesting words for you in the next session. Till then, stay tuned to our channel for more updates. I'll take your leave now. You all have a wonderful day. Thank you.